Hello aspirants, welcome back to my channel Edutainment with PP, and here in this video we are going to discuss how to present your law paper in CA exams. It may be CA foundation exam or CA inter exam. You can apply this format and present your answer in your exams, right? If we see in for CA foundation, law is only for 60 marks, and for CA inter it is for 100 marks, which is divided into two, that is 30 marks for MCQ and 70 marks for subjective paper, right? And 30 marks or it is simple plain MCQs or case based MCQ. You have to select one option in that and you have to complete that 30 marks paper. But in this, in 70 marks, you will get a direct question or a case based study. We will discuss about the direct question also and case study also. But the direct question and case based, in which you have to present, you have to write the answer in full format. So the format in which we you have to present paper, we are going to discuss that, right? So let's get started without wasting any time. How to present your paper? First, let us understand the type of question which can appear in your exams. The first one would be the direct question, which would be a plain question. For example, write the provisions for qualification and disqualification of auditor for CA exams. And in the CA foundation, it may be a direct question, the essentials for contract act, sorry, essentials for the contract. It will be the direct question in which you have to write the answer accordingly. For example, the answer contains 6 points, then simply you will write 6 points and then complete the answer. That will be the direct question. Direct मतलब यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे एंड उसके अंदर का जो भी आंसर है वो लिख देंगे, राइट? तो उसका बेसिक फॉर्मेट होगा, राइट? ऐसा लिख सकते हो स्टार्टिंग में पॉइंट नंबर 1 which will be of provisions, in which you will put a bracket and quote a section number. In case you don't know the section number, please don't quote it. If you quote any wrong section number, then you will lose your marks, right? Definitely, if you quote any section number, there is a positive point in your answer. If you don't, there is no any problem in that, right? And of the Companies Act, if it in case the chapter is of Indian Contract Act, then you will write it as of Indian Contract Act. This will basically define your answer, that exam answer, that this answer is from Indian Contract Act, or this question is from Indian Contract Act, right? Or this question is from Companies Act. The examiner will be clear that the student who is writing the answer is clear of the question from which chapter is it is appearing, right? Then you will start your answer, the main answer here. If there is a sub point of that answer, then you will present it like this in a format, this way. Then if there is a sub point of that sub point, then you will write this answer like 1. Then after that, for that sub point point, you will write a. For that sub point, sub to sub point, you will write 1, and you will complete your answer, and you will lastly give your conclusion for the direct question. This will be the basic format for the direct question, and you will write the directly. For example, if the question is for 4 marks, then you can mention 4 points of that question, then you will get likewise the marks according to your answer, right? The second one is the um, um, most explanatory part. For example, case based study, in which they will give one situation. For this situation, there are some provisions, and वो provisions को हम अप्लाई करते हुए अपने को कंक्लूजन निकालना है, राइट? There is a situation, it may be a situation on any section of your act or any section of your company law or any section of Indian Contract Act, right? For that, we have to apply the provisions which are mentioned in the act, and we have to arrive at conclusion. Now, how to present this question? ये आंसर को कैसा प्रेजेंट करें? सिंपल बेसिक फॉर्मेट सेम. प्रोविजंस, यू विल राइट प्रोविजंस. पहला वाला पॉइंट होगा प्रोविजंस. प्रोविजंस में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन
सेक्शन, यहाँ का सेक्शन नंबर, इफ यू डोंट नो द सेक्शन नंबर प्लीज डोंट कोट द सेक्शन नंबर, गलत क्वेश्चन सेक्शन नंबर अगर आप कोट करेंगे तो उसमें यू कैन लूज द मार्क्स, राइट, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर इनकेस ये चैप्टर का होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ऐसा लिखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड इनकेस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होगा तो सोगा ऑफ सोगा, एंड कोई भी दूसरा एक्ट होगा, फॉर एग्जांपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऐसा लिखेंगे इन द ब्रैकेट सो दैट क्लियर है कि ये चैप्टर से आंसर लिखना है। देन उसके बाद स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट लिखोगे यहाँ पे, देन उसका सब पॉइंट है तो सब पॉइंट को प्रेजेंट करेंगे, देन उसका सब पॉइंट है तो यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, एंड फॉर्मेट ऐसे ही चलता जाएगा। देन अगेन फॉर द सेकंड पॉइंट यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, फिर उसके बाद उसका सब पॉइंट ए एंड उसका सब पॉइंट आई, प्रोविजंस लिख लिया, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वन पर्टिकुलर प्रोविजन, एक सिंगल प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल एक लाइन का प्रोविजन है तो डू राइट ओनली वन लाइन, अगर इनकेस वो पूरा सेक्शन का प्रोविजन लिखेंगे तो बहुत लेंदी आंसर हो जाएगा एंड टाइम वेस्ट भी होगा। अगर स्टडी बन रहा है ओनली वन ऑन वन प्रोविजन देन यू हैव टू कोट ओनली दैट वन प्रोविजन ओनली, so that you can save your time and the question is also the answer will also be not much lengthy, it will be short and sweet and you will get full marks, right। ये लिख दिया, provisions लिख दिया, then you have to explain that। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट प्रोविजंस है, राइट, प्रोविजंस लिख लिया, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं, क्वेश्चन को जो है ना वो एक्सप्लेन करना है, व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन एंड यू हैव टू लिंक दिस क्वेश्चन विद द प्रोविजंस, मतलब यानी कि जो प्रोविजंस लिखा है वो प्रोविजंस को हमें लिंक करना है, प्रोविजंस को लिंक करना है जो भी सिचुएशन दिया है उससे, राइट, प्रोविजन को लिंक कर लिया सिचुएशन से, देन वो जो एक्सप्लेन करना है इन 2 to 3 लाइन्स, 3 लाइन्स to 4 लाइन्स, जितना बनता है उतना एक्सप्लेनेशन देना है, देन उसके बाद लास्ट में हम आ जाएंगे कंक्लूजन में। ये 3 स्टेप है केस स्टडी को प्रेजेंट करना, फर्स्ट प्रोविजन, प्रोविजन में अपना प्रोविजन आ जाएगा, जो जो प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, लॉ का जो लास्ट चैप्टर है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो प्रोविजंस में आएंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन में इनकेस क्वालिफिकेशंस अप टू द मार्क नहीं है, इनकेस नहीं है तो वो जो लिंकिंग करेंगे प्रोविजन, जो क्वेश्चन है उसको लिंकिंग करेंगे क्वेश्चन से, एंड देन लास्टली अपन लिखेंगे कि जो भी क्वालिफिकेशन है ऑडिटर का वो अप टू द मार्क नहीं है, वी कांट अपॉइंट हिम एज एन ऑडिटर करके कंक्लूजन दे देंगे, राइट। तो यही बेसिक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में अगर आप ये क्वेश्चन को आंसर को लिख लोगे then it will be the best thing that you will get step-wise marking and also you will get score good marks in your exams, right। 3 steps, that is provisions, first you will write your provisions, then the explanation of the question which you will link with the provisions, right, which you will link with the provisions, then conclusion, your conclusion in 2 to 3 lines that क्या होना चाहिए था and क्या हुआ, right, conclusion। This is the basic format of the law paper or law question or case-based study, right? Let us see 2 to 3 questions from the RTP, so that you will also get a confirmation that how to present this. This is our RTP, law का RTP. Let us see the second question. देखो second question दिया है कुछ क्या है, रेजोल्यूशन, नोटिस ऑफ रिक्वेस्ट, कंपनीज एक्ट का है क्वेश्चन, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, का आंसर कैसे प्रेजेंट किया वो देखेंगे। We'll see the presentation of the answer. Here it is. First, they mention the section of the company section, then Companies Act। जैसा अपन अपन क्या है अपने इसमें प्रोविजंस में हम करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सिंपल। देन उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन चालू, हियर देयर इज द प्रोविजंस, पूरा ये भी प्रोविजंस है, ये भी प्रोविजंस है, ये भी प्रोविजंस है, देन ये भी प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस है, देन उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया है, देखो ये वाला पार्ट में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या होना चाहिए था, दैट इज एक्सप्लेनेशन पार्ट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट which is linking the question with the provisions, and lastly they have given the conclusion according to Sudha Limited,
Do not share any holding in subsidiary relationship as the former holds shares in the later, just in the fiduciary capacity on behalf of the company. तो सिंपल, ये हुआ अपना कंक्लूजन, राइट। तो ये जो हुआ है, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये अपना प्रोविजंस का पार्ट है। देन ये वाला जो पार्ट है अपना एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। देन दिस इज द कंक्लूजन। अगर देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम सिंपल। फर्स्ट क्या है, ये प्रोविजंस पार्ट, दिस इज द प्रोविजंस पार्ट। ये वाला पार्ट जो है ना, वो प्रोविजंस है। देन ये जो है, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है, जो अपनी क्वेश्चन को लिंक करता है अपना प्रोविजन से, राइट। देन दिस इज द कंक्लूजन पार्ट। सेम, this will be the major format, that is a basic format that you can present your law answer, right? If you want this PDF, then this PDF is available in the description box. And if you have liked the video, you have understood how to present the paper, then like the video, share the video, and subscribe the channel as well. Thank you very much.